So now we are going to start 1857 revolt, which is covered in NCERT, 12th NCERT, Modern History. The topic is the weakness of the revolt and its suppression. Even though spread over a vast territory and widely popular among the people, the revolt of 1857 could not embrace the entire country or all the group and classes of the society. It did not spread to South India and most eastern and western India because these regions had repeatedly rebelled earlier. Most ruler of the Indian state and its big zamindars, selfish to the core and fearful of British, might refuse to join in. On the contrary, the Sindhia of Gwalior, the Holkar of Indore, the Nizam of Hyderabad, the Raja of Jodhpur, and other Rajput rulers, the Nawab of Bhopal, the rulers of Patiala, Nawab, Jind, and other Sikh mm, uh, chief, captains of Punjab, the Maharaja of Kashmir, the Ranas of Nepal, and many other ruling chiefs, and a large number of big jamidars gave active help to the British in suppressing the revolt. In fact, no more than 1% of the chiefs of India joined the revolt. 1% ने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया. गवर्नर जनरल कैनिंग later remarked that these rulers and chief acted as the breakwater to the storm, which would have otherwise swept us in one great wave. हमारे जो उस टाइम के गवर्नर थे इंडिया के कैनिंग, उन्होंने बोला है कि ये इन लोगों ने एक ब्रेक वाटर की तरह हमारे साथ काम किया है. अगर ये नहीं होते तो हम इतनी तेज स्टॉर्म में हम लोग बह गए होते. मद्रास, बॉम्बे, बंगाल and western Punjab remained undisturbed, even though the popular feeling in this province favored the rebels. Moreover, except for the discontented and the dispossessed zamindars, the middle and upper classes were mostly critical of the rebels. Most of the propertied classes were either cool towards them or actively hostile to them. Even many of the talukdar, big jamidars of Awadh who had joined the revolt abandoned it once the government gave them an assurance that their estates would be returned to them. This made it very difficult for the peasants and soldiers of Awadh to sustain a prolonged guerrilla campaign. The money lenders were the chief target of the villagers' attack. They were therefore naturally hostile to the revolt. जितने भी साहूकार थे गांव में, उन्होंने इस रिवोल्ट का विरोध किया और अंग्रेजों का साथ दिया. The merchants too gradually became unfriendly. The rebels were compelled to impose heavy taxation on them in order to finance the war or to seize their stock of foodstuff to feed the army. The merchants often hid their wealth and goods and refused to give free supply to the rebels. मर्चेंट अपने गुड्स और संपत्ति को
देना नहीं चाहते थे, छुपा के रखे थे विद्रोहियों को. द जमींदार्स ऑफ बंगाल ऑल्सो रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश. बंगाल के जमींदार जो थे वो किसके? ब्रिटिशर्स के लॉयल थे. दे वेर आफ्टर ऑल अ क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश. Moreover, the hostility of Bihar peasants toward their zamindars frightened the Bengal zamindars. Similarly, the big merchants of Bombay, Calcutta, and Madras supported the British because their main profit came from foreign trade and economic connection with the British merchants. इन लोगों का जो था वो हित जुड़ा हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ, इसलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया. द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट. जो भारत के आधुनिक पुरुष थे जिनको कहा जाता है मॉडर्न मैन, इन्होंने भी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं सपोर्ट किया. दे वेर रिपेल्ड बाय द रेबल्स अपील टू superstition and their opposition to progressive social measure. Repelled means पीछे धकेलना. Okay, as we have seen, the educated Indian wanted to end the backwardness of their country. एजुकेटेड इंडियन चाहता था कि उसके देश का पिछड़ापन खत्म हो जाए. दे mistakenly believed that the British rule would help them accomplish this task of modernization. उन लोगों को ऐसा विश्वास था कि ब्रिटिशर्स ये काम कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ के एजुकेटेड पीपल थे. While the rebels led by जमींदार्स, old rulers and captains and other feudal elements would take the country backward. Only later did the educated Indian learn from experience that foreign rule was incapable of modernizing the country and that it would instead improvise it and keep it backward. बाद में जो हमारे यहाँ के एजुकेटेड इंडियंस थे उनको पता चला कि कोई भी जो है विदेशी सरकार जो है हमारे देश की गरीबी को और पिछड़ेपन को ख़त्म नहीं कर सकती. द रिवोल्यूशनरीज ऑफ 1857 proved to be more far-sighted in this respect. They had a better instinctive understanding of the evils of foreign rules and of the necessity to get rid of it. On the other hand, they did not realize, as did. So, instinctive understanding means natural understanding of the evils of foreign rule and of the necessity to get rid of it. Means जो स्पाइस थे, जो रेबल्स थे, जब वो फाइट करने लगे तो उनको पता नेचुरली उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि जो फॉरेन रूल कर रहे हैं फॉरेनर्स, वो एविल्स हैं, वो हमारे दुश्मन हैं और वो उससे हमें निजात चाहिए. ऑन द अदर हैंड दे डिड नॉट रियलाइज, एज डिड द एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया, दैट द कंट्री that the country had fallen prey to foreigners precisely because it had stuck to rotten and outmoded customs and पुराने ढंग का. ये बंद क्यों जा रहा है? इसका अभी स्टॉप किया? नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा होगा सारा. ओके. मतलब ये The country had fallen prey to foreigners precisely because it had stuck to rotten, मतलब जो सड़ी गली, and outmoded, मतलब पुराने ढंग के customs, traditions and institutions के साथ वो थे. They failed to see that national salvation lay not in going back to feudal monarchy but in going forward to modern society. मतलब
मॉडर्न सोसाइटी में ही उनका फ़ायदा है, ना कि वो पुराने सेल्वेशन मतलब नौकरशाही में लगे रहें। मॉडर्न इकोनॉमी, साइंटिफिक एजुकेशन, मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, in any case it cannot be said that the educated Indians were anti-national. In any case it cannot be said that educated Indians were anti-nationals. मतलब हम ये नहीं कह सकते थे कि जो एजुकेटेड इंडियन है वो एंटी नेशनल हैं और लॉयल टू फॉरेन रिजाइम। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते थे, क्यों? क्योंकि वो अपने इंट्यूशन से, उनके एक अंतरात्मा से वो ये तो जज कर पा रहे थे कि अब जब फॉरेनर हमारे यहाँ रहेंगे तो वो हमारे देश का विकास करेंगे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरली वो उनकी हिडन जो क्या बोलते हैं षड्यंत्र जो उनका जो रच रहे थे अंदर अंदर, वो नहीं देख पा रहे थे, बल्कि उसके अपोजिट वो ये सोच रहे थे कि वो आएंगे तो वेस्टर्न कल्चर डेवलप होगा, अपनी इंडियन सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, कस्टम्स नए आएंगे और लोगों के अंदर कुछ वेस्टर्न और साइंटिफिक एजुकेशन का विकास होगा, ऐसा सोच रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत सोच रहे थे या वो एंटी इंडियंस हैं या फिर वो लॉयल हैं फॉरेनर्स के लिए। एज इवेंट्स आफ्टर 1858 were to show, they were soon to lead a powerful and modern national movements against British rule. Whatever the reasons for the disunity of Indians, it was to prove fatal, मतलब घातक, to the revolt. But this was not the only weakness from which the cause of revolt suffered. मतलब ये सिर्फ एक रीज़न नहीं था उनकी कमजोरी का जिससे कि सफ़र हुआ, हम लोगों ने संघर्ष किया। They were short of modern weapons and other materials of war. Most of them fought with such ancient weapons as pikes and so on. मतलब वो तीर और ये हंसिए वसिए से ही लड़ रहे थे, उनके पास मॉडर्न वो नहीं थे, वेपन्स नहीं थे। They were also poorly organized, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं थे। Sepoys were brave and selfless, but they were also ill disciplined. मतलब brave तो थे, साहस भी था, लेकिन डिसिप्लिन नहीं थे। समटाइम्स दे बिहेव्ड मोर लाइक अ रियोटियस मूव देन अ डिसिप्लिन्ड आर्मी। वो दंगाई के तौर पे मतलब बिहेव करने लगते थे, डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह नहीं। द रिबल यूनिट्स डिड नॉट हैव कॉमन प्लान्स ऑफ मिलिट्री एक्शन। The rebel units did not have common plans of military action. Okay. So the rebel units मतलब जो विद्रोही थे did not have common plan of military action or authoritative heads or centralized leadership. मतलब जो विद्रोही थे उनको एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं था, कोई एक हेड नहीं था, सब अपने अपने में हेड बन रहे थे। अपराइजिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर कम्प्लीटली अनकोऑर्डिनेटेड। मतलब जो दूसरे जगह से जो कंट्री से जो लोग थे वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। द लीडर्स वर जॉइंड टुगेदर बाय अ कॉमन फीलिंग ऑफ हेटर्ड for the alien rule, but by nothing else. Once they overthrew British power from an area, they did not know what sort of political power or institution to create in its place. They were suspicious and jealous of one another. आपस में ही एक दूसरे की jealousy, and often indulge in सुसाइडल क्वेरल्स, मतलब मारने वाली, आपस में मरने मराने वाली लड़ाई करने लगी। सिमिलरली द पीजेंट्री हैविंग डिस्ट्रॉयड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, वो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उनको जलाने लगे, एंड मनी लेंडर्स बुक्स, एंड ओवरथ्रोन द न्यू जमींदार्स, जो नए जमींदार थे उनको मारने लगे। बिकम पैसिव नॉट नोइंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब पैसिव हो गए और उनको ये नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है। In fact, the weaknesses
Okay. In fact, the weakness of the revolt went deeper than the failing of individual. The movement had little understanding of colonialism, which had overpowered India or of the modern world. It lacked a forward looking program, coherent ideology, a political perspective, or a vision of the future society and economy. The revolt represented no social alternative to be implemented after the capture of power. The diverse elements which took part in the revolt were united only by their hatred of British rule, British rule, but each of them had different grievances. सबके अपने अपने दुख थे and different conceptions. सबके अपने अपने ideas थे of the politics of free India. इंडिया को free करने के लिए. This absence of a modern and progressive program enabled the reactionary princes and jamidars to seize the levers of power of revolutionary movement. Yes, I repeat, the absence of modern and progressive program enabled the reactionary princes and jamidars to seize the lever of power of revolutionary movements. Seize का मतलब होता है कि बंद जब्त करना. But the feudal character of the revolt should not be stressed over much. Okay. Gradually, the soldiers and the people were beginning to evolve or to develop different types of leadership. मतलब सोल्जर अलग अलग तरीके की लीडरशिप करने के उसमें विचार में रहे. The very effort to make the revolt a success was compiling them to create new types of organization. For example, at Delhi, a court of administrators consisting of 10 members, 6 army men and 4 civilians was established. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मतलब उन्होंने ये काम किया दिल्ली में. All its decisions were taken by majority vote. The court took all military and administrative decisions in the name of emperor. Emperor के नाम पे उन्होंने अपना वो किया. Similarly, efforts to create new organizational structure were made in other centers of revolt. As Benjamin Disraeli warned the British government at the time, if they did not suppress the revolt in time, अगर उनने ये सही टाइम पे नहीं किया, they would find other characters on the stage which whom to contend, संघर्ष करना besides the princess of India. कि वो उनको राजाओं से लड़ना पड़ेगा क्योंकि कई सारे जगह के रिबल्स, कई सारे जगह के स्पाइस वहाँ पे आके इकट्ठे हो गए थे. तो राजाओं की सेना तो यही थी, तो उनको राजा से लड़ना पड़ता फिर. The lack of unity among Indians was perhaps unavoidable at this stage of Indian history. Modern nationalism was yet unknown in India. Patriotism meant love of one's small locality or region or at most one's state. मतलब ये इंडिया के बारे में एट अ होल नहीं सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि अपनी लॉयल्टी, मतलब जैसे अवध के राजा अपने के बारे में और पंजाब प्रोविंस वाले पंजाब के बारे में, ऐसे ऐसे लोग सोच रहे थे. ऑल इंडिया इंटरेस्ट एंड कॉन्शियसनेस दैट these interests bound all Indians together were yet to come. In fact, the revolt of 1857 played an important role in bringing the Indian people together and imparting to them the consciousness of belonging to one country. मतलब इस रिवॉल्ट ने एक मैसेज दिया ये कंट्री वालों को कि उनको
इम्पार्टिंग मतलब प्रदान कर दिया एक कॉन्शियस लेवल कि वो एक कंट्री से बिलोंग करते हैं. इन द एंड ब्रिटिश imperialism with a developing capitalist economy and at the height of its power the world over and supported by most of the Indian princes. Thank you. Yes. In the end, British imperialism with the developing capitalist economy and at the height of its power the world over and um, over and supported by most of Indian princes and chiefs uh, and chiefs uh, proved militarily too strong for the rebels. The British government powered immense supplies of money, and arms into the country through had later, though Indians had later to repay the entire cost of their own support. Means जो लोग support कर रहे थे उन्हीं को ही cost pay करना पड़ा. The revolt was suppressed. Sheer courage could not win against a powerful and determined army who planned enemy who planned its every step. The rebels were dealt an early blow when the British captured Delhi on 20 September 1857. Yes, I repeat, on 20 September 1857, after prolonged and bitter fighting. The aged Emperor Bahadur Shah was taken prisoner. The royal princes were captured and butchered on spot. Okay. Butchered on the spot means मतलब काट दिया गया. The emperor was tried and exiled मतलब निकाल दिया to Rangoon where he died in 1862. Rangoon now known as Burma. ना बर्मा में है रंगून. Okay. Rangoon is in Burma. Lamenting bitterly the fate which had buried him far away from the city of his birth. So, thus the great house of Mughals was finally completely extinguished. मतलब अंत में सारा वो खत्म हो गया. With the fall of Delhi, the focal point of the revolt disappeared. दिल्ली को जब कब्जा कर लिया तो टोटल रिवॉल्ट खत्म हो गया. The other leaders of the revolt carried on the brave but unequal struggle, with the British mounting a powerful offensive against them. John Lawrence, Outram, Havelock, Neil, Campbell, Hugh Rose were some of the British commanders who earned military fame in the course of this campaign. One by one, all the great leaders of the revolt fell. Nana Sahib was defeated at Kanpur, defiant to the very end, and refusing to surrender. He escaped to Nepal. जो नाना साहिब था वो नेपाल चला गया था early in 1859, never to be heard of again. Tatya Tope escaped into the jungles of central India where he carried on bitter and brilliant guerrilla warfare until April 1859 when he was betrayed by the जमींदार्स फ्रेंड्स एंड कैप्चर्ड while asleep. बिट्रेड मीन धोखा दिया होता है. किसने? मतलब बोल रहा है कि तात्या टोपे जो थे वो जंगल में चले गए थे
के सेंट्रल इंडिया के, वहाँ पे उनके एक जमींदार फ्रेंड ने, वहाँ पे इन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू रखा था, लेकिन इनके एक जमींदार फ्रेंड के विश्वासघात से ये पकड़े गए। Okay. When he was betrayed by a zamindar friend and captured while asleep, he was put to death after a hurried trial on 15th April 1859. The Rani of Jhansi had died on the field of battle earlier on 17th June 1858. रानी की झांसी को भी मार दिया गया युद्ध के मैदान में। बाय 1859, कुंवर सिंह बख्त खान बहादुर खान ऑफ बरेलवी, राव साहिब ब्रदर ऑफ नाना साहिब and Maulvi Alhamdulillah were all died, while the Begum of Awadh was compelled to hide in नेपाल। मतलब जो बेगम वहाँ की थी अवध की, उनको मजबूर कर दिया गया नेपाल में रहने के लिए। बाय द एंड ऑफ 1859, ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर इंडिया वाज फुल्ली रीस्टैब्लिश्ड। 1859 में दोबारा से ब्रिटिश अथॉरिटी पूरे इंडिया पे फैल चुकी थी और उनने अपना आधिपत्य जमा लिया था। बट द रिवॉल्ट हैड नॉट बीन इन वेन। जो विद्रोह छिड़ा था वो उस पर कोई पर्दा नहीं चढ़ा हुआ था। इट इज़ अ ग्लोरियस लैंडमार्क इन अवर हिस्ट्री। ये एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हो गया था। दो इट वॉज अ सेपरेट एफर्ट टू सेव इंडिया इन the old way and under traditional leadership. It was the first great struggle of the Indian people for freedom from the British imperialism. कहा जाता है कि पहला स्ट्रगल है, पहला बड़े लेवल पे स्ट्रगल है इंडियन पीपल का फॉर द इंडिपेंडेंस। इट पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। मतलब इसके थ्रू पक्का हो गया कि मॉडर्न नेशनल मूवमेंट का उठ खड़ा, मतलब नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आने लगी। द हीरोइक एंड पेट्रियोटिक स्ट्रगल ऑफ 1857 and the series of rebellions preceding it left an unforgettable impression on the minds of Indian people, established valuable local traditions of resistance to British rule. Again, I repeat, left unforgettable impression on the minds of Indian people, established valuable local traditions of resistance, मतलब बदला लेने की भावना, to the British rule, and served as a perennial means regular source of inspiration in their later struggle for freedom. The heroes of revolt soon become household names in the country, even though the very mention of their names was frowned upon the rulers. So ultimately we can say जो हीरो थे उनको पकड़ा गया, उनको सजाएं दी गई और उनको नज़रबंद कर दिया गया।